Hello everyone, welcome back to my channel. Another week, another video, and in this week's video we are doing something exciting. I know मैं हमेशा ये बोलती हूँ but I know कुछ ना कुछ exciting होता ही है वीडियो में. So yeah, वो introduction जो थी वो बहुत ही चेहरे के करीब थी. Sorry about that. I think you could see everything on my skin which is not feeling that great. मैंने अभी भी threading कराई है and it's not at its best. तो इस वीडियो में मैं वो सवालों के जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछे और मैं पूछते आए हैं और मैं हमेशा उनके जवाब नहीं देती. कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं जो आप बोलते हैं यार ये कैसा सवाल है, ये मैं इसका जवाब बस क्यों दूँ, मुझे नहीं देना. तो वो वाले सवाल जो हैं वो आज इस वीडियो में हम आंसर करेंगे और होपफुली आपको पसंद आएंगे. अगर आपने ऐसा कोई सवाल पूछा है जो आपने भी खुद सोचा होगा कि यार ये मैं पूछूं नहीं पूछूं, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, मगर आप फिर भी पूछ लेते हैं बिकॉज यू जस्ट आर वेरी क्यूरियस. तो स्टे ट्यून्ड, आपका सवाल शायद जवाब दे आप कट. आई थिंक आप सबको पता होगा कि शायद मेरा मोस्ट आस्क्ड सवाल क्या हो. वो ये है कि व्हाट इज़ योर हाइट एंड व्हाट इज़ योर वेट. ऑनेस्टली मैंने शायद कभी अपने वेट के बारे में इतना नहीं सोचा, मगर अब लोग पूछ रहे हैं मेरी हाइट के बारे में, मेरे वेट के बारे में, तो बता देते हैं. माई हाइट इज़ 5'1". आई एम वेरी शॉर्ट. यूजुअली व्हेन पीपल मीट मी दे आर लाइक ओह यू आर शॉर्ट इन पर्सन, थैंक्स फॉर टेलिंग मी. I already know that. And my weight is 43 kg. I used to be 40 before Corona. और फिर Corona में obviously I gained weight, so I'm now 43 kg. So that is, I think, the most asked question ever. बब्स को अभी भी ज़ैन बुरा लगता है. Wow, that is a very interesting question. अगर by the way आप सब सोच रहे हैं ये ज़ैन कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं, actually this is ज़ैन मलिक from One Direction and I used to love like absolutely love him and Bubs used to hate him. तो अभी भी कुछ ऐसा मुख्तलिफ नहीं है. I don't love him anymore because I think I've grown up, but I still do like him. I think he's nice and I like his music. Bubs on the other hand, उसको ज़ैन मलिक बिल्कुल नहीं पसंद. She only likes his music, she doesn't like the artist. So अच्छा, फिर एक और सवाल है जो मुझे ईयर ऑन ईयर आता रहा है. वो सवाल ये है कि जो मैंने ट्रिप अपनी दोस्तों के साथ यूरोप में की थी, दैट इज़ व्हेन आई वेंट टू जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया. तो उसके कुछ सवाल हैं कि वो ट्रिप का एक्सपेंस कितना था. वो ट्रिप थी 2018 में, सो इट वाज अ वाइल बैक. उस वक्त PKR थोड़ा स्टेबल था. डॉलर जो था वो उस टाइम पे लाइक 100, 101, 107 तक था. तो ऑब्वियसली जो है आपकी परचेजिंग पावर थोड़ी ज़्यादा थी और वो ट्रिप उस टाइम पे मुझे पड़ा था 2,50,000 रुपीज़ का. सो इट वाज जस्ट एक्चुअली बिलो 2,50,000. मैंने बजट उसका 250 रखा था मगर वो तकरीबन 230 तक में हो गया था. एंड सरप्राइजिंगली एक सवाल है मेरी एज के बारे में. आई हैव नो आइडिया वाई, लाइक आई हैव आंसर्ड questions about my age इतनी दफ़ा. I am hello, you wanna come say hi? Thanks. Cut this. No, that stays on the video. Okay, so yeah, मेरी एज है 26 years old और ये सवाल बहुत आता है. I don't know why, अब मैंने इतनी दफ़ा बताया. अच्छा, फिर एक सवाल है कि when am I giving you guys the good news. मतलब ये सोचते हुए थोड़ा सा क्रिंज लगता है कि लाइक व्हाट. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस फॉर अ सेकंड. अगर आपका कोई दोस्त है और उसकी भी शादी हुई, क्या आप उससे पूछेंगे क्या बाय द वे तुम बच्चा कब कर रहे हो? नॉट रियली. और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूछते हैं जाके, देन शेम ऑन यू गाइस. दैट इज सच अ पर्सनल थिंग. लाइक व्हाई वुड यू आस्क एनीवन दैट? इट्स सो पर्सनल. लाइक इट्स जस्ट you're literally asking them the most personal thing about their marriage. तो ये सवाल बहुत था. मैं आप सबको बताती चलूँ कि none of your business and yeah, none of your business. एक सवाल है do you pray 5 times a day? I try to keep my like religious and political views social media से दूर because I think जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं और पोस्ट करने लगते हैं, बहुत like unwanted से opinion आते हैं from people who you don't know you. और I think इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट तरीका है कि like best not talk about it. But that does not mean कि I am not religious. That does not mean that I don't care about something. It just goes to show कि I want to keep my platform like free of all of these things. मैं vlog बनाती हूँ और मैं आपको अपने दिन की हर चीज़ दिखाती हूँ mostly like
दिन की जितनी चीज़ें दिखानी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो अगर मैं आपको नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ती नहीं हूँ. एंड आई डोंट थिंक आई शुड बी बाउंड टू शो यू दैट आई एम ऑफरिंग नमाज. मैं नमाज़ आपके लिए नहीं पढ़ी, मैं नमाज़ अपने लिए पढ़ती हूँ, अल्लाह मियाँ के लिए पढ़ती हूँ. एंड यू कैन जज मी ऑन दैट डिसीजन, आई डोंट रियली माइंड. बट आई थिंक ये सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं. अगर मेरा चैनल होता ही रिलीजियस नॉलेज के बारे में तो I would be talking about that, but my channel is about lifestyle and beauty and fashion, so I talk about that. Obviously, I don't talk about other things. So I hope that answers your question. How much? Okay, एक सवाल है, how much weight have you and Roman gained after marriage? Oh my god. Okay, तो मैंने आपको बताया कि मैंने तो कोई 3 kg weight gain कर लिया है बकवास चीज़ें खा के. नुमान का आई एम नॉट श्योर, ही हैज़ डेफिनेटली गेन सम वेट. आई थिंक जो हम लोग ने वेट गेन किया हमने पेट में किया है और कहीं नहीं. आई थिंक द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्प्लीटली फाइन. ऑल द वेट इज़ जस्ट इन द स्टमक, क्योंकि घर बैठे बैठे बंदा बैठे ही रहता है तो और खाता रहता है और मोटा हो जाता है. सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच ही हैज़ गेन, मे बी 2-3 kgs एज वेल. होपफुली नॉट मोर देन दैट. या सरप्राइजिंगली एक और सवाल जो बहुत आता है वो है कि आर यू एंड रिदा जैन रिलेटेड? We are not related. Honestly, I've gotten so many people say कि you look like her, but I just don't see it. She's really pretty, but I just think कि उसकी और मेरी शक्ल बहुत मुख्तलिफ है. आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं. शायद मिलती हैं, मुझे ऐसा फील नहीं होता है. बट we're not sisters. I have actually never really met her. एक दफ़ा उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट सेंड किए थे and I did try them out and I do like them. But other than that, I don't think I look like her and we are not related. एक सवाल है love और arranged marriage. इस सवाल का जवाब मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ. My marriage was, I think you'd call it a love marriage because मैं और नुमान we knew each other from before and we liked each other and we wanted to get married. So yeah, it was a love marriage. सवाल है your laser hair removal experience. Okay, so इस पे मैं एक detailed video करूँगी because I think थोड़ी सी background और like proper reviews इसके होने चाहिए हैं. So don't worry, I am still undergoing the process and the treatment is still going. कोरोना की वजह से बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया था तो it was kind of like starting from scratch again for a few places. तो जब पूरा हो जाएगा I'll give you my review. मगर overall अगर मैं आपको बताऊँ, experience has been very good. एक सवाल है, do you plan on traveling anywhere in the next few months? Honestly, अगर आप मुझसे पूछें then I would love to travel anywhere, like literally just take me anywhere and I would love to go. But I am not really sure क्योंकि हर दिन के लिहाज से एक नई सिचुएशन होती है कोरोना वायरस में और you just don't really know. It's like a bit of a gamble if you travel. See, let's hope for the best. We'll see. नेक्स्ट सवाल है, how much do you earn? अगर आपको बचपन में किसी ने नहीं बताया कि you should never ask someone their age, you should never ask someone how much money they make, and you should never ask someone when they're gonna have a baby. अगर ये नहीं बताया तो फिर आपको पता है अब. मेरी इनकम जो है it honestly varies. I work different jobs. I have a 9 to 5 which is not really 9 to 5. It is 10 to 7 to 8 something like that. और उससे obviously I work in supply chain. So if you want to know how much a person working in supply chain makes, आप ये Google कर सकते हैं. You can get like an average estimate of what a person working in supply chain makes. YouTube से I don't even know how much I make from YouTube because YouTube is just sometimes you make certain amount, sometimes you make a certain amount. It honestly just depends कि आपको कितने views मिल रहे हैं, कितने ads आ रहे हैं. So there is like no fixed amount of income YouTube पे. I mean, a lot of people come and ask you, how do you make money from Instagram? Well, Instagram पे कंटेंट पोस्ट करने से आपको कोई पैसे नहीं मिलते. इट इज़ द ब्रांड्स दैट कम एंड वर्क विद यू, दैट्स हाउ यू मेक योर मनी. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ब्रांड आती है से सनसिल्क and they want to work with me, so I would give them a budget based on कि मेरी engagement कितनी है, कितने लोगों ने मेरे पोस्ट को देखा है, कमेंट्स लिखे हैं, लाइक किया है, सेव किया है, और इन सारी बेसिस पे एक कोट बनता है जो कि ब्रांड्स को आप प्रेजेंट करते हैं एंड देन दे शॉर्ट लिस्ट. तो बहुत सारे लोगों से वो कोट्स ले रहे होते हैं. दे डोंट जस्ट लाइक वर्क विद वन पर्सन, दे टेकिंग कोट्स फ्रॉम एवरीवन हु हैज़ एन इंस्टाग्राम पेज एंड दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रीच. एंड इफ दे थिंक कि दैट अमाउंट जस्टिफाइज द एंगेजमेंट, देन उसके हिसाब से वो अप्रूव करते हैं बजट एंड देन यू हैव टू मेक कंटेंट फॉर देम. सो दैट इज़ हाउ यू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम. अगर आपको गूगल करना है कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे कितने आप पैसे कमा सकते हैं, if you're like starting out and you have an Instagram and you don't know what to
quote. तो I think you should go on to Google and search कि what kind of quotes you can give according to your engagement, और उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि इतने engagement वाले कितना कोट कर सकते हैं, इतने कितना कोट कर सकते हैं. So I think again आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए. किसी ने सवाल पूछा है रसोड़े में कौन था, नुमान भाई तो नहीं थे. आई विश नुमान होते, मगर ही डज नॉट लाइक गोइंग टू द किचन अनलेस ही एब्सोल्युटली हैज़ टू. सो आई डोंट थिंक इट वाज नुमान. एक सवाल है, योर हस्बैंड अलाउ यू दैट टाइप ऑफ ड्रेसिंग, व्हाट डज दैट मीन. मतलब ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि मैं इसका क्या जवाब दूँ. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अलाउ, ये बात मुझे समझ. सो आई थिंक अलाउ इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड. द करेक्ट वर्ड इज़ कि आप को पता है कि आपके हस्बैंड को या आपके फादर को या आपके पेरेंट्स को क्या चीज़ जो है वो पसंद है, एंड व्हाट यू लाइक वेयरिंग. एंड इफ इट्स समथिंग दैट दे डिसएग्री ऑन, देन यू कैन हैव अ चैट विद देम एंड बी लाइक, हे लिसन, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू और आई वांट टू वेयर एंड आई फील कंफर्टेबल इन इट, एंड व्हाट आर योर कंसर्न्स. तो यू नो आप एक बात करके कॉमन अग्रीमेंट पे आ सकते हैं. अलाउ या नॉट अलाउड बहुत strong terms and I don't believe in those words at all. I just feel कि everybody should have the power to make their own decisions, और जब आप खुद अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ करते हैं तो you do it to an extent जब आपको fulfillment feel होती है और आपके उस decision से हर कोई खुश होता है. अगर आप कोई forced चीज़ करते हैं तो I don't think you can be happy and the others around you be happy. So I think that is something to think about. So my husband does not restrict me in doing things. Yeah, I can do what I want as long as I know that my decisions will not hurt him. Okay, बहुत deep हो गया. एक सवाल जो कि बहुत I think this was the most asked question multiplied by 100 was that क्या आप अपने in-laws के साथ रहती हैं. ये सवाल का जवाब दूंगी ज़रूर, but I just want to know कि why do you want to know exactly. को अगर पता चल भी जाएगा कि मैं रहती या नहीं रहती, how is it going to make a difference? I just don't understand. Like fine, अगर आप मुझसे मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे कोई सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे पूछें कि अरे आपने वो लिपस्टिक यूज़ की थी, उसका क्या शेड है. I mean that is something that is helpful information. You can go and buy it. You can ask me what brand I'm wearing. You like it, you can also go buy it. So like, or you can ask me about something which makes an impact on your life. ये जान के कि अगर मैं अपने ससुराल के साथ रहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब कैसे फ़र्क आ रहा है. I really wanna know. So this is my question for you guys. Let me know in the comments, why do you want to know? Because I know कि ये वीडियो वो है जिसमें मैं वो जो सवालों के जवाब दूंगी, where I don't avoid answering the questions. Then yes, I do live with my in-laws, but I also want to know, okay, how does that making difference to you. So that was the video. I hope you enjoyed it. बहुत सारे और सवाल भी हैं, but honestly that we can save for another video. And I hope you enjoyed it. I hope अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, make sure to give it a big thumbs up, subscribe to my channel, recommend my channel to your friends if you enjoy watching my videos and you think they will also enjoy it. And yeah, bell notification on कर लें, because a lot of people are saying that they don't get notified when I upload a video. So make sure that's on and you will always be notified. And now I will soon see you in my next week's video. Till then, खुदा हाफिज़, bye bye. I don't know मैं इतनी तेज़ क्यों बोलती हूँ, but yeah, bye.